dear students, myself Gangadhar Solanke, and I welcome you all to the MCGM's virtual classroom. My dear students, today in Standard 7's Geography, we'll be continuing with the topic Agriculture. In the first part of this topic, we people learnt about the concept of agriculture, and in animal husbandry. In animal husbandry, we learnt about dairy farming, sheep and goat rearing, poultry, beekeeping, fish farming, sericulture, nursery, then the concept of greenhouse farming and how greenhouse farming gives good returns for the farmers, or how it is important to get maximum economic returns. And now today in the second part of this topic, we are going to learn about the types of farming and the concept of agro tourism. Different types of agriculture have evolved due to geographical and cultural diversity and technological differences in different regions. Now, one thing which is very important here, which is very important to understand, that why there are different types of farming. It is because of the geographical diversity. The main reason behind this is geographical diversity. In any particular area there is एक्सेसिव रेनफॉल, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश ही नहीं होती है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मीडियम बारिश होती है. इन दैट पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर क्रॉप इज टेकन. देन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑल्सो affects the farming, and very important thing, technological differences in different regions. In some places technology is very much advanced. For example, if we talk about Israel is the country जो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी फार्मिंग के लिए यूज़ करती है. So because of all these things, we have types of farming. The type of farming depends upon the purpose and aims of methods of farming. Very important, the type of farming depends upon, जो types किए गए हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? Upon the purpose and aims of methods of farming, the crops being cultivated, the techniques used, land use, etc. And broadly on the screen you can see the types of agriculture which can be identified. Two basic or main types: subsistence farming and the commercial farming. In the subsistence farming we have again two types: intensive farming and shifting cultivation. One by one we'll study about this in detail. And in commercial farming, extensive grain farming, plantation farming, market gardening and horticulture. Now, what is subsistence farming, what is commercial farming, what is intensive farming, and what is shifting cultivation, or what is exactly extensive grain farming, plantation farming, market gardening or horticulture? About that we have to study in our today's part. So if we talk about subsistence farming, and in that we have to talk about intensive farming. Intensive farming and shifting cultivation are the two types in traditional farming. Intensive farming is carried out in one and the same farm for years together. What is intensive farming? Which is carried out in one and same farm. एक ही खेत में सालों से जो खेती की जाती है, that is called intensive farming. In shifting cultivation, now if we talk about shifting cultivation, every year a new area is chosen for cultivation. Now it is in the name only. Shifting cultivation है तो कुछ तो shift किया जा रहा है, तो हर साल नए एरिया में कल्टिवेशन किया जाता है, that is shifting cultivation. And intensive farming is what? एक ही जगह पे एक ही खेत में सालों से cultivation किया जाता है, that is intensive farming. So this one is the basic difference between intensive farming and shifting cultivation. Now if we go for the intensive farming, or the characteristics of intensive farming, getting maximum production from a minimum area is the characteristic of intensive farming. Getting maximum production from a minimum area, and that is why it is repeated by year and year. हर साल ये रिपीट किया जाता है एक ही फार्म के टुकड़े में या एक ही खेत में. सो
basic characteristic or main characteristic of intensive farming is that getting maximum production from a minimum area. Due to a large population, due to large population और limited availability of land, दोनों चीज़ें हो सकती है, एक तो ज़्यादा population है और limited availability of land, per head holding is small in intensive farming. This type of farming is mostly seen in developing regions, not in developed regions. It is in developing regions क्योंकि population ज़्यादा है और population ज़्यादा होने से क्या है, कम कम खेती सब में बांटी जाती है, तो उसी पर्टिकुलर खेत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉप्स लिए जाते हैं. Farm production is sufficient only for the requirement of the family. In this type of farming, the cultivator and his family are totally dependent on the farming. In intensive farming, cultivator जो खेती कर रहा है and his family are totally dependent on farming as farm production is low. Farm production क्या है? Low है. The economic condition of the cultivator is also poor because of the production which is low. And it is but natural or obvious to understand that अगर प्रोडक्शन ही कम है तो फार्मर क्या रहेगा, पुअर रहेगा. बट बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन और पूरी फैमिली उसी पे डिपेंडेंट है तो ज़्यादा पैसा उसमें से नहीं मिलता है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मोस्टली animate energy is used. Besides the cereals, vegetables are also grown to some extent in intensive farming. Now the next one in detail now about shifting cultivation. Shifting cultivation is a primitive type of cultivation. एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये पहले जब हुआ करता था. This type of cultivation is practiced in the tropics in densely forested areas or hilly tracts. क्योंकि वहाँ पे उतनी जगह नहीं मिलती है, इसलिए हर बार शिफ्ट किया जाता है लैंड को. The farmer initially selects a piece of land. The farmers initially selects a piece of land in the forest. पहले एक लैंड की पीस को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसको क्लियर किया जाता है. He clears the land by cutting down the trees, plants, removing the shrubs and grass. Once the cut trees dry out, he burns them. The leftover ash gets mixed in the soil and acts as manure, which increases the production value of that land. Sowing and harvesting is done before the rainy season. For that you can see figure 9.6. शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस तरह से ये जगह बनाई गई है और बाकी जगह पे आपको पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन इसको साफ किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ फार्मिंग. द प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट, क्योंकि जगह बहुत कम है. हेंस पीपल अंडरटेक हंटिंग, फिशिंग and gathering of bulbs and roots from forests. So we can say that the farmer or the people who are practicing shifting cultivation or shifting farming or engaged in shifting cultivation not 100% dependent on this type of cultivation or agriculture. They do other things also, which includes hunting, fishing and gathering of bulbs and roots from forest. In this type of farming, the fallow period is longer than the crop period. Fallow period is longer than the crop period. इसका मतलब ये होता है कि क्रॉप पीरियड जितना है उससे ज़्यादा उस खेत में क्रॉप नहीं रहेगा, उसका पीरियड ज़्यादा होता है, तो प्रोडक्शन कम ही रहेगा. After the productivity of the land depletes in 2 to 3 years, a different piece of land is selected for cultivation, and that is why we are calling it as shifting cultivation. 2-3 साल बाद वहाँ से उतना प्रोडक्शन नहीं मिलता है या फिर कल्टीवेशन नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, तो जगह बदल दी जाती है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. एंड नाउ द नेक्स्ट वन, commercial farming.
In commercial farming, we have to talk about extensive grain farming, plantation farming, market gardening, and horticulture. But before that, we'll just try to understand what is exactly commercial farming, as it is in the name only. कमर्शियल है तो इकोनॉमिकली इसके रिटर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग and plantation agriculture are the two major types covered under commercial farming. Two things: extensive grain farming and plantation agriculture. Now in this, the first one, extensive grain farming. Farm size is greater than 200 hectares. Just think about the area. In this, farm size is greater than 200 hectares and due to large farm size. जैसे हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखा या फिर इंटेंसिव फार्मिंग में देखा, एरिया उतना ज़्यादा नहीं है. बट इन एक्सटेंसिव फार्मिंग इट इज़ ग्रेटर देन 200 हेक्टर्स एंड ड्यू टू लार्ज फार्म साइज एंड स्पार्स पॉपुलेशन भी कम है, बिखरा हुआ है इन द रीजन. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड क्रशेस. Pesticides are sprayed with the help of helicopters or planes. Just think about the kind of farming. ये हमारे देश में हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि ट्रैक्टर्स यूज़ हो रहा है, क्रशेस यूज़ हो रहा है, बट जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो स्प्रे किए जा रहे हैं, उसके लिए हेलीकॉप्टर और प्लेन का यूज़ किया जा रहा है. तो इतना बड़े लेवल पे कमर्शियल फार्मिंग हमने हमारे देश में जनरली नहीं देखा है. शायद कई जगहों पे होगा, बट which is very rare, not common. Monocrop, single crop cultivation is the striking characteristic of this type of farming. The crops are wheat or corn, and beside these, barley, oats, soybean are also cultivated to some extent in the commercial farming. Not only this, heavy capital investment is necessary for this type of farming. Heavy capital investment is necessary for this type of farming, and this is easy to understand by the point कि हेलीकॉप्टर और प्लेन का अगर यूज़ किया जा रहा है for the purpose of spraying pesticides, or the if we people think about the farm size, it is greater than 200 hectares. तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा उसमें डालना ही पड़ेगा. So heavy capital investment is necessary for this type of farming, since huge एक्सपेंडिचर, ज़्यादा पैसा लगता है, आर नीडेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गोडाउन्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एट्सेट्रा. The problems in extensive grain farming are droughts, attacked by pests, locusts, etc. and market fluctuations. Now, ऐसा नहीं है कि इतना सारा पैसा डालने के बाद उतना पैसा भी रिटर्न आ सकता है इस तरह की फार्मिंग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ती है. एंड इन दैट द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन, ड्रॉट्स. अगर अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती है या फिर ज़्यादा बारिश होती है, तो उतना पैसा नहीं मिलेगा. देन अटैक बाय पेस्ट्स और द मार्केट फ्लक्चुएशंस. जितना पैसा लगाया है शायद मार्केट में उस क्रॉप का उतना पैसा नहीं मिलेगा. एंड देन द लास्ट वन, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट दिस type of farming is carried out in the temperate grassland regions. कहाँ पर होती है इस तरह की फार्मिंग? In the temperate grassland regions. And the next one is plantation farming. Next one is plantation farming. Farm size in plantation agriculture is 40 hectares or above. Now if we talk about the extensive grain farming, where the farm size is greater than 200 hectares, and here in plantation farming, farm size in plantation agriculture is 40 hectares or above. 40 हेक्टर्स है या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है. एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन हिली ट्रैक्ट्स, यूज ऑफ मशीन्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हिली एरियाज है, वहाँ पर मशीन्स को लेकर नहीं जा सकते. एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन हिली ट्रैक्ट्स, use of machines is not possible, and hence
local manpower becomes important. So it gives occupation there for people, it gives employment there for the people. The crop for which the geographical conditions are favorable is planted. This is a single crop cultivation practice too. This type of agriculture does not produce food grains. इस तरह के जो एग्रीकल्चर है प्लांटेशन फार्मिंग में क्रॉप्स नहीं लिए जाते, विच इज़ इन एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग. Only commercial crops like tea, rubber, coffee, coconut, cocoa, spices, etc. are planted. This type of farming began and spread mostly during the colonial period. It is practiced in the tropics. जैसे हमारे देश में भी हमें पता है टी या कॉफ़ी जो है अंग्रेज आए फिर उन्होंने लगाना स्टार्ट किया एंड देन उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता बढ़ता गया. तो ये जो कॉलोनियल पीरियड है उसमें इस तरह की फार्मिंग स्टार्ट हुई. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्स लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन of crops, use of scientific methods, exportable production, processing, etc. So money matters in this type of farming also. Then climate, manpower, deterioration of environment, economic and managerial problems are the major issues faced by this type of agriculture. And then the last one, this type of agriculture is practiced in India and other South Asian countries, Africa, South and Central America, etc. And now the next one, market gardening. Market gardening is a type of cultivation developed in modern types. ये जो मार्केट गार्डनिंग है ये अभी अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हुई टाइप ऑफ फार्मिंग की है. कुछ दिनों में कहने से अच्छा है कि हम ये कहें कि पिछले कुछ सालों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है मार्केट गार्डनिंग की हो रही है. दिस हैज़ डेवलप्ड मेनली as a result of urbanization and the ready markets available in urban centers. This has developed mainly as a result of urbanization and the ready markets available in urban centers, because as we know we need vegetables, we need fruits on large scale in urban areas because of the पॉपुलेशन, और उन पॉपुलेशन को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये मार्केट गार्डनिंग जो है वो की जाती है. फार्मर्स कल्टिवेट वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम इन द विसिनिटी ऑफ अर्बन सेंटर्स टू कैटर टू द डिमांड्स फॉर सिटी ड्वेलर्स. पहले मैंने आपको कहा कि शहरों में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और उनकी ज़रूरतें जो है वेजिटेबल्स की वो पूरी करने के लिए ये मार्केट गार्डनिंग एक मॉडर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जो आजकल ज़्यादा प्रैक्टिस में है. दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. जिस चीज़ का डिमांड है उसी चीज़ का सप्लाई किया जा रहा है और उस चीज़ का सप्लाई करने के लिए उस तरह की मार्केट गार्डनिंग की जाती है. In market gardening you can see here production of fruits, vegetables or flowers on a commercial scale. Use of irrigation, organic and chemical fertilizers, low investment, use of manpower, demand of markets, use of science and technology, etc. are the characteristics of market gardening. It is dependent on good transport network because it is very important to reach the place in time, to reach the people in time. और जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल, उसको उसी टाइम में वहाँ तक अगर नहीं पहुँचाया गया तो ये डर होता है, ये खतरा होता है कि वो ख़राब हो जाएगी और उससे उतना वैल्यू नहीं आएगा या फिर लोग उसे नहीं खरीदेंगे. सो इन मार्केट गार्डनिंग गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. द क्वालिटी and price of the product is determined by rapid transport. So transport is the thing which is very important in market gardening.
and hence this type of farming is also known as truck farming. And by this one can understand that how ट्रांसपोर्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन मार्केट गार्डनिंग, क्योंकि इसको दूसरा वर्ड जो है वही ट्रक फार्मिंग है। उतने टाइम पे उस जगह पे पहुंचना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इन कमर्शियल फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द images, and by this you can understand about what we are going to talk. Cultivation of flowers and fruits is a subtype of market gardening. It is under the heading of market gardening, or we can say it is a subtype of market gardening, but which includes cultivation of flowers and fruits. Fruits and flowers are the major products of this type of farming. When we talk about horticulture or floriculture, then it is nothing but the fruits and flowers. In this type of farming, modern as well as traditional methods are used, and the size of farm is small and every plant is cared for properly, and it is very important to care because उससे जो रिजल्ट है उतना मिलता है। एक अगर मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो उस एक पेड़ का भी उतना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, क्योंकि उससे रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो। फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्चर्डरी, मेजर products of horticulture are flowers like lily, gerbera, tulip, dahlia, then this one is the chrysanthemum, marigold, etc. These fetch a good price in the market. Different native and exotic fruits like mangoes, custard apples, grapes, bananas, pomegranates, dragon fruits, cherries, orange, raspberries, strawberries, mulberries, etc. are cultivated in fruit farming. For this you can go for the figure 9.10. At places like महाबलेश्वर, पांचगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक, ये सारी जगहें है, ये पर्टिकुलर फ्रूट्स के लिए फेमस है। यहाँ पर या फिर वहाँ पर वो पर्टिकुलर फ्रूट्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट नागपुर, तो नागपुर का जो ऑरेंज है, संतरा, वो फेमस है। नेक्स्ट थिंग, व्हेन farming is done using all waste matter mixed in the soil, it is called organic farming. Talking about organic farming, the nutrient requirements of the crops is fulfilled by soil, and therefore replenishment of used up nutrients is necessary. Nutrients are also used abundantly to increase the yield. So when farming is done using all waste matter mixed in the soil, it is called organic farming. On the screen you can see figure 9.11, which is given in our textbook, preparing organic fertilizers. The litter should be decomposed in the ground. Grasses like sesbania or jute are also buried in the soil for making manures. Cow dung and compost manures are used. Vermicompost is obtained from organic waste, and nowadays there is great demand for these organic products. जो organic vegetables, organic fruits है, इनकी demand बहुत ज़्यादा है। When farming is done using all waste matter mixed in the soil, it is called organic farming. और organic farming के नाम पे रिटर्न भी जो है फार्मर्स को ज़्यादा मिलते हैं। For controlling pests, organic pesticides like neem can be used. The crop obtained from organic farming is high in quality because chemical उसमें use नहीं हो रहे। Chemical fertilizers and pesticides are not used in such type of farming. तो उन्हें healthy भी कहा जाता है क्योंकि chemicals उसमें नहीं use किए जाते हैं। Next thing now, agrotourism, which is again nowadays in the news or the topic which is in demand. Agrotourism is a new field in tourism. In the tropics, various types of agricultural products are cultivated, and hence there is greater scope for agrotourism. और जो शहर के लोग हैं
जिनको के पास गांव नहीं है, या फिर गांव है लेकिन जाना नहीं होता है, ऐसी जगहों पे ये एग्रो टूरिज्म आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं. इन अग्रेरियन कंट्रीज द रूरल लाइफ, लोकल कस्टम्स एंड कल्चर्स आर यूटिलाइज्ड फॉर एग्रो tourism. On the screen now you can see figure 9.13, in which you can see the agrotourism. City dwellers are curious about the farmers' life and environment. The people who are away from the farm, खेत से बहुत दूर है या फिर जिनके पास खेत नहीं है या फिर शहरों में रहते हैं, people always curious about the agriculture and the things related with agriculture. So many of them visit rural area just to see this. Agrotourism is financially beneficial for the farmer and his village, क्योंकि उससे फिर अर्निंग आना शुरू हो जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. सो इट इज़ important. On the screen now you can see figure 9.14, and what you have to do, choose one each pair. Choose one in each pair. इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक और इनमें से एक आपको चूज करना है. आफ्टर द डिस्कशन or after choosing, you may have realized that those fruits and vegetables that look fresh, for example, यहाँ पर हम देख रहे कि यहाँ पर हम देख रहे जो फ्रेश दिख रहा है या फिर फ्रेश नहीं दिख रहा है. Those fruits and vegetables that look fresh and attractive may not have been ripened using proper methods. At times, in order to get the produce earlier, artificial chemicals, pesticides are employed profusely, and which may create health problems और उससे कुछ side effects हो सकते हैं. These facilitate quicker production and the produce appears fresh and attractive, but such products are harmful to the health. Also, they do not last long after purchase. खरीदने के बाद वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं. Next and the last point of this topic, marketing system. Marketing systems are necessary for making the good produced by the farmers available to the consumer at a fair price and in time. एक तो पैसा मिलना भी चाहिए और टाइम पे मिलना चाहिए. अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे, न्यूज़ टीवी पे देखोगे तो बहुत सारी न्यूज़ हमें मिलती है जहाँ पर फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं और उनको उतना पैसा रिटर्न में नहीं मिलता है. उनका प्रोडक्ट जब बाज़ार में आ जाता है तो फ्लक्चुएशन होता है मार्केट प्राइस में उस पर्टिकुलर क्रॉप के, और उन्हें वो पैसा नहीं मिलता है. अगर हम कंपैरेटिवली कहेंगे तो जो बाकी लोग होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं, फिर ऐसे टाइम पे निकालते हैं जब भाव बढ़ जाता है, लेकिन फार्मर्स इतने ज़्यादा दिनों तक अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव पर्टिकुलर मार्केट सिस्टम फॉर द farmers. Agriculture in India is scattered over vast areas. All farmers are not organized. Most of the farmers are economically weak and cannot market their production on their own. That is why the system of agricultural produce market committee is established. Agricultural produce market committee is established at the taluka level. At these places, farmers bring their produce and sell to the traders. As farm produce is perishable, there has to be a proper arrangement for its sale. Institutes like farmers organizations, consumer societies, etc. help in this task and try to protect farmers from the exploitation by agents, mediators and others. This one is the thing which is very important to think about the farmers, क्योंकि बहुत बार ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है कि जितना पैसा फार्मर्स ने अपने प्रोडक्ट में लगाया है, कल्टीवेशन करने में लगाया है क्रॉप का, उतना पैसा भी उन्हें वापस नहीं मिलता है. क्योंकि इन इंडिया इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर पे डिपेंड है. कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, जब चाहिए तब नहीं हो रही है, जब नहीं चाहिए तब हो रही है.
तो ऐसे वक्त में क्या होता है, जो क्रॉप है फील्ड में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द मार्केट सिस्टम, जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है बाय द एजेंट्स, बाय द मीडिएटर्स और बाय any other factor. So it is very important to have particular market system for the farmers. Some of the farm produce is directly used by industries as raw material. International markets are now becoming easily available for farm produce due to globalization. हमने देखा है कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम जहाँ रहते हैं वहाँ वहीं के सोसाइटियों में भी डायरेक्टली आते हैं थ्रू फार्मर्स. तो बीच में जो एजेंट्स है, मीडिएटर्स है, वो नहीं होते हैं. डायरेक्टली जो फ़ायदा है वो फार्मर्स को होता है. ऑल्सो दे सेल द प्रोड्यूस विथ प्रॉपर पैकेजिंग. Hotels and malls also require agricultural produce on a large scale. By advertising on the internet, their products get sold in local as well as international markets. But for this, it is very important to use new methods or new technologies which are available in the market. And for this kind of education is also important, kind of vision is also important. एंड वी कैन से देयर इज़ लैक ऑफ दिस इन आवर कंट्री, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में ही है और उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके या फिर जो प्रोडक्ट है अपने खेत में उसे बेचने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है. बट धीरे धीरे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इन सारी चीज़ों का यूज़ करके बहुत सारे फार्मर्स है वो अच्छी तरह से रिटर्न्स ले रहे हैं. Now the last one, farming in Israel. Israel is a major exporter of fresh farm products. It is the most advanced country as far as agricultural technology is concerned. It has adverse climate. Again and again मैं आपको climate की बात कर रहा हूँ कि climate कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, जब चाहिए तब नहीं होती है, जब नहीं चाहिए तब होती है. ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो इज़राइल में बहुत ज़्यादा है. एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस है. इट हैज़ एडवर्स क्लाइमेट, सीवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड मोर देन हाफ इट्स लैंड इज ऑक्युपाइड बाय हॉट डेजर्ट्स. Then also there is farming on large scale in Israel, because by overcoming all these unfavorable conditions and persistently following the path of modernization of agriculture, it has taken a giant leap in the field of agriculture. So if we also have to do something new or good for the farmers in our country, it is very important to follow the path of Israel, or to use different technologies, or to use modern things in the agricultural field. So today in our topic we people discussed about the types of farming. In that, the two main types: subsistence farming, commercial farming. In subsistence farming, intensive farming, shifting cultivation. Then in commercial farming, extensive grain farming, plantation farming, market gardening, horticulture, and then the last point about agro tourism. Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications. So my dear students, this is all for today. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care.